So today we are going to discuss one more important topic of this chapter. Topic is Bohr's model of hydrogen atom. So first model of hydrogen atom was Thomson's model, also called plum pudding model. Next one, Rutherford nuclear model, and the third one is Bohr's model of hydrogen atom. So this different model of atom explain about the arrangement of subatomic particles inside an atom. Subatomic particle means electron, proton and neutron. How arranged inside an atom, it is explained by the different models. So now we are going to discuss about the Bohr's model of hydrogen atom. So according to the Rutherford nuclear model, atom consists of how many parts? Two parts. One heavy part at the center of the atom, which is known as nucleus, and another part is extranuclear part. Extranuclear part में इलेक्ट्रॉन रहता है and nucleus में neutrons and protons रहता है. Due to the presence of positively charged proton at the nucleus is positively charged. According to the Rutherford nuclear model, at the extranuclear part, electrons are revolving around the nucleus in a circular path, and that circular path named as orbit. That circular path named as orbit by Rutherford. So in those circular paths, electrons are revolving around the nucleus. That circular paths named as orbit by Rutherford. So orbits are the circular path in which electrons are revolving around the nucleus. So Bohr's model of hydrogen atom we will explain by the different postulates, with the help of different postulates. Postulates means point. So different points, important points related to this model are known as postulates. So different postulates, different postulates. Postulates means points related to this model. Different postulates of this model are: first postulate, according to the first postulates of Bohr's atomic model for hydrogen atom, Bohr's only hydrogen atom के लिए ये मॉडल एक्सप्लेन किया था. हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. Those atom is containing only one electron. That atom is called mono-electron atom. Those atoms are containing more than 2 electrons. They are called multi-electron atoms. So Bohr's model is explained only for hydrogen atom, in which only how many electrons is present? 1 electron is present. So first point related to this model is then the Rutherford भी बोला है, Bohr's भी बोला है, electrons are revolving around the nucleus in a circular path. ये तो Rutherford भी बोला था, electrons are revolving around the nucleus in a circular path. That circular paths are known as what? Orbit. लेकिन Bohr's और क्या बोला? जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस, दैट सर्कुलर पाथ्स हैव डेफिनिट एनर्जी एंड फिक्स्ड रेडियस. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ Bohr's, electrons are revolving around the nucleus in a circular path of fixed radius and fixed energy.
So according to the Bohr's first model, electrons are revolving around the nucleus in a circular path of fixed energy and fixed radius. That means in those circular orbit, electrons are revolving around the nucleus. That circular orbits have definite energy, fixed energy. और सर्कुलर ऑर्बिट लोगों का फिक्स्ड क्या होता है, रेडियस होता है. रेडियस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द पाथ सर्कुलर ऑर्बिट in which electron is revolving around the nucleus. So this is the first postulate of Bohr's model of hydrogen atom. So according to the Bohr's model of hydrogen atom, electrons are revolving around the nucleus in a circular path of fixed energy and fixed radius. Second point, the circular path in which circular path of definite energy are also known as normally इन लोगों को ऑर्बिट बोला जाता है. रदरफोर्ड बोला सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट, लेकिन बोर्स बोला द सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनिट एनर्जी आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल, also known as stationary states, also known as cells. सबसे important cells. So according to the Rutherford, in those circular path, electrons are revolving around the nucleus. They are named as orbit. But Bohr's क्या बोला? That circular path, Bohr's क्या नाम दिया? So circular path लोगों को Bohr's क्या नाम दिया? Energy level. और क्या बोला? Stationary states बोला. और क्या बोला? Cells बोला. Cells. तो cells सबसे important है. So cells are the circular path, circular orbit in which electrons are revolving around the nucleus. Or that cells or circular path also known as energy level. Why they are also called energy level? Because they have definite energy. So one more postulates of this model is third postulates of this model is मैक्सवेल क्या बोला? मैक्सवेल क्या बोला था? जब एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस, ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग दैट इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी इमिट करेगा. और जब ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा, देन धीरे धीरे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिक्रीज होगा. आफ्टर डेफिनिट टाइम इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एंटर्स टू द न्यूक्लियस. अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोला था, मैक्सवेल क्या बोला था? आफ्टर डेफिनिट टाइम इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स टू द न्यूक्लियस, क्योंकि ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी. जब रिवॉल्विंग के टाइम में जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा. देन आफ्टर डेफिनिट टाइम इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स टू द न्यूक्लियस.
लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है. Electrons are always revolving around the nucleus in a circular path. So it was not explained by the Rutherford. Why electrons are not enter to the nucleus? It was not explained by the Rutherford. So that is one of the drawback of the Rutherford nuclear model. So to eliminate that drawback, कौन सा मॉडल आया फिर? बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो बोर्स क्या बोला? जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस, ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है. जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन नाइदर एब्जॉर्ब एनर्जी नॉर इमिट एनर्जी. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रेडिएशन और एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब कर सकता है. कब कर सकता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्रांजिशन होगा, जंप होगा फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल. जब एक इलेक्ट्रॉन जंप होगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, देन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब रेडिएशन. लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिटर्न होगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द from higher energy level to the lower energy level, then that electron emit radiation. लेकिन according to the Rutherford, जब एक fixed circular path में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है around the nucleus, during the revolving, electron neither emit energy nor absorb energy. ठीक है? So an electron neither emits nor absorb energy or radiation during the revolving around the nucleus in a fixed circular path. This is also one of the postulates of Borh's model of hydrogen atom. So an electron neither emits nor absorbs energy or radiation during the revolving around the nucleus in a fixed circular path. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट और एब्जॉर्ब कर सकता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्रांजिशन होगा, जंप होगा from one energy level to the another energy level. Then an electron emits or absorbs energy during the transition मतलब jumping, excitation, transition from one energy level means stationary states, orbits, also called cells, one energy level to the another energy level. So according to the third postulate of Borh, an electron neither emits nor absorbs energy during the revolving around the nucleus in a fixed circular path. लेकिन an electron emits or absorbs energy during the transition from one energy level to the another energy level. Suppose these are two energy levels. This is the first energy level, suppose E1. ये particular एक energy level का definite energy होता है. So हम लोग consider किया this is the one of the energy level E1 and this is another one energy level E2. Suppose E2 energy level का energy E1 से ज़्यादा है. हम लोग consider किया energy level second energy level का energy
फर्स्ट एनर्जी लेवल से ज्यादा है। देन जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ट्रांजिशन होगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, देन डेल्टा ई अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। रेडिएशन एब्जॉर्ब, डेल्टा ई अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सेम इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी लेवल टू E1 एनर्जी लेवल जब रिटर्न होगा, देन सेम डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, इमिट्स करेगा, इमिट्स। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट डेल्टा ई, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब होगा? हाउ कैन यू फाइंड आउट डेल्टा ई इक्वल टू हाउ मेनी, E2 माइनस E1। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डेल्टा ई that means E equal to h nu according to the Planck's quantum theory. So delta E का जगह में हम क्या लिख सकता है, h nu लिख सकता है। h is Planck's constant, nu is the frequency of radiation, then E2 minus E1. So nu equal to then E2 minus E1 divided by हम लोग क्या लिख सकता है, h is the Planck's constant. So delta E मतलब इमिटेड एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन का एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, E2 से E1 माइनस करना पड़ेगा। इमिटेड एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा, मतलब न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय h। E2 माइनस E1 मतलब डेल्टा E। सो इमिटेड एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन का हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकता है, इमिटेड एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन का हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर सकता है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकता है, फ्रीक्वेंसी को फिर वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू c by lambda, lambda is the wavelength, c is the velocity of the light. So this is the third postulate of Bohr's model of hydrogen atom. Then one more postulate of this model is one more postulates So this is one more postulate of Bohr's model of hydrogen atom. So only those orbit an electron is revolving around the nucleus in which angular momentum of an electron is integral multiple of h by twice pi. h Planck's constant, pi also a constant. pi वैल्यू होता है 22/7। 22 को 7 से डिवाइड करने से कितना निकल जाता है, 3.14। So constant divided by constant, we have another constant. So in hydrogen atom, actually in any atom around the nucleus there are infinite number of orbits or energy levels or cells, लेकिन सभी ऑर्बिट में, सभी सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं होता है अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि हाइड्रोजन एटॉम में ही देखो, हाइड्रोजन एटॉम में भी अराउंड द न्यूक्लियस इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एनर्जी लेवल्स है, लेकिन हाइड्रोजन एटॉम में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल में तो हाइड्रोजन एटॉम वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं होगा अराउंड द न्यूक्लियस। सो कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा अराउंड द न्यूक्लियस? ओनली दैट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by twice pi। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास एंड वेलोसिटी को, एक इलेक्ट्रॉन का मास एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से इट इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए पार्टिकल का मास को उनका वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
or what is the angular momentum? Suppose this is the nucleus, this is an orbit. In an orbit, electron is revolving around the nucleus. Suppose this is the electron और इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग m कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v है. So how many momentum of this electron? m into v. Then how many angular momentum of this electron? क्योंकि ये angular momentum is a product of mass, velocity and radius of the orbit. हम लोग सपोज यहाँ कंसीडर किया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज हाउ मेनी r. सो ये इलेक्ट्रॉन का देन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. सो एंगुलर मोमेंटम only that orbit an electron is revolving around a nucleus in which angular momentum of an electron is equal to integral multiple of h by twice pi. मतलब only that orbit electron is revolving around a nucleus in which जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट का साथ क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा. h by twice pi is a constant और ये जो n है, n it is a number, it represents the number of cells or orbit around the nucleus. जैसे कि ये n का वैल्यू है 1 2 3 4 लाइक दैट. तो ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस. फॉर द फर्स्ट सेल अराउंड द न्यूक्लियस n इक्वल टू 1, सेकंड सेल के लिए n इक्वल टू 2, थर्ड सेल के लिए n इक्वल टू 3, फोर्थ सेल के लिए n इक्वल टू 4 लाइक दैट. सपोज एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस. सेकेंड सेल में, कौन सा सेल में? सेकेंड सेल में. तो सेकेंड सेल के लिए n वैल्यू कितना होगा? 2. तो सेकेंड सेल में एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड सेल इक्वल टू n का जगह में 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड सेल के लिए n वैल्यू 2 है. सो 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देन क्या रह जाएगा? h by pi. दैट मींस इन द सेकेंड सेल angular momentum of an electron equal to how many? h by pi. Similarly, first orbit में एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? h by twice pi क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n वैल्यू कितना है? 1. तो थर्ड ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? द थर्ड ऑर्बिट के लिए n का जगह में हम लोग लगाना पड़ेगा 3. देन 3. तो थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा 3 by 2 into h by pi. So this is an important relation for you to find out angular momentum of an electron in a particular orbit. So this relation is important for entrance examinations. So this is the fourth postulates, and these are the different postulates related to the Borh's model of hydrogen atom. So now we are going to discuss an important note related to the Borh's model of hydrogen atom. So this is a note. In case of hydrogen atom का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 है. Z represents atomic number of an atom. So in case of hydrogen atom, radius of an orbit or energy level or cell, particular एक ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन है. This is the relation RL equal to A naught into n square. This is the relation to find out radius of an orbit in which atom? Hydrogen atom. So what is n represent here? N represents here number of cells around the nucleus. Or here A naught it is a constant. इनका वैल्यू है 92.5 picometer. How many picometer? 92.5 picometer. And remembering 1 picometer equal to 10 to the power minus 12 meter. So this is an important relation
to find out radius of an orbit in hydrogen atom. So radius of first orbit कितना हुआ? Radius of first orbit in hydrogen atom. First orbit के लिए n equal to how many? 1. So ये रिलेशन में डालने से r1 n का जगह में 1 लगा दिया. r1 मतलब radius of first orbit in hydrogen atom equal to a नॉट का वैल्यू है 52.9 और n का जगह में हम लोग लगाना पड़ेगा 1 स्क्वायर. दैट मींस दिस इज इक्वल टू क्या आ गया? 52. This is 52.9. Sorry, 52.9. This is 52.9. Sorry, 52.9 picometer. So radius of the first orbit in hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस को बोला जाता है Borh's radius. Radius of the first orbit in hydrogen atom is known as what? Borh's radius. So how many Borh's radius of hydrogen atom? Then you have to write 52.9 picometer. These points are very very important for entrance examination. इस बार NEET question paper only textbook का ऊपर में बेस करके ही आया. पूरा बेसिक क्वेश्चंस आया था इस बार NEET में. So textbook is very very important for you. Textbook का every line is important for you. इसीलिए टेक्स्ट बुक में जितना पॉइंट लिखा हुआ है, जितना टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए कोशिश करना है. हम भी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कर रहे हैं. सो आप लोग भी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है सही से. देन यू विल क्वालिफाई एट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. तो टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए यू हैव टू अप्लाई दिस रिलेशन. तो r2 आ जाएगा r2 इक्वल टू 52.9 into 2 स्क्वायर हो जाएगा. 2 स्क्वायर में मतलब 4 का साथ 52.9 मल्टीप्लाई करो, देन यू हैव द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द थर्ड ऑर्बिट. देन यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम. Then second point in case of hydrogen, second point is second point number 2, energy of an energy level or cell. Find out करने के लिए this is the relation En equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 by n square joule per atom. So this is the relation to find out energy of an energy level in hydrogen atom. So according to Borh's model of hydrogen atom, electrons are revolving around the nucleus in a circular path of fixed energy and radius. तो पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को रिलेशन मिल गया. अभी एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए रिलेशन मिल गया इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो En इक्वल टू minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 by n square joules per atom. So this is the relation to find out energy of an energy level. So what n represents here? n here represent कर रहा है number of cells around the nucleus. देखो negative sign represents here energy of the energy level less than 0. 0 से कमती है. एनर्जी लेवल का एनर्जी 0 से कमती है. Remember it. Suppose first energy level के लिए first energy level के लिए n equal to how many? 1. n equal to 1. So first energy level के लिए E1 equal to कितना होगा? minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 square. 1 by 1 square that is equal to 1 joule per atom. So this is the energy of the first energy level. Similarly, energy of the second energy level minus 2.18 into 10 to the power
10 to the power minus 18 into 1/2 स्क्वायर जोड़ पर एटम। सो कैलकुलेट करने से एनर्जी निकल जाएगा। सिमिलरली थर्ड एनर्जी लेवल का निकल सकता है। We know that there are infinite energy level around the nucleus. So जब एक एनर्जी लेवल इनफाइनाइट डिस्टेंस में होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, उनका सपोज एनर्जी E इंफिनिटी, तो E इंफिनिटी का वैल्यू कितना होगा? जो एक एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस में होगा, उनका एनर्जी कितना होगा? E इंफिनिटी, क्योंकि n का जगह में इंफिनिटी डालना पड़ेगा। सो E इंफिनिटी पर कितना होगा? -2.18 into 10 to the power -18 into 1/infinity स्क्वायर। किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करने से दैट इज इक्वल टू 0। सो इक्वल टू क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। सो जब एक एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस में होता है, जिसके लिए n वैल्यू कितना होता है? इंफिनिटी, उनका एनर्जी कितना होता है? 0। और ये जो एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस, उनका एनर्जी भी कितना होता है? 0 होता है। और दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाई दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस में होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उनका ऊपर में न्यूक्लियस का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। अकॉर्डिंग टू Rutherford model, there is a electrostatic forces of attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electron. लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस में होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऑन दैट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? 0 होता है। एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। रिमेंबर इट। सो फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है? 0 होता है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस में उनका एनर्जी कितना है? 0। इनफाइनाइट डिस्टेंस से धीरे धीरे न्यूक्लियस का पास आ रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियस का सामने में आ रहा है, देन उनका एनर्जी 0 से कमती होगा। 0 से एनर्जी कमती होने से ऑब्वियसली एनर्जी इज नेगेटिव। सो इसीलिए एनर्जी लेवल का एनर्जी क्या दिखा रहा है? नेगेटिव दिखा रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस में होता है, उनका एनर्जी 0 होता है। जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस का सामने में आएगा, देन इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। किसी भी सब्सटेंस वर्क डन करने से एनर्जी डिक्रीज होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस इनफाइनाइट डिस्टेंस से धीरे धीरे न्यूक्लियस के सामने में आएगा, वर्क डन करेगा। ड्यू टू द वर्क डन उनका एनर्जी डिक्रीज होगा। उनका एनर्जी कितना से डिक्रीज होगा? 0 से डिक्रीज होगा, मतलब उनका एनर्जी नेगेटिव होगा। सो इसीलिए एनर्जी लेवल का एनर्जी क्या होता है? 0 होता है। और जब हम लोग मूव करता है, when we move away from the nucleus, then energy of the energy level increases. This is the first energy level, energy E1. This is the second energy level, energy E2. Third energy level, energy E3 and E infinity. E infinity का एनर्जी कितना होता है? 0 होता है। So when we move away from the nucleus, then energy of the energy level क्या होता है? Increases. Remember it. और जब एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस में होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो दैट इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितना होता है? 0 होता है। So in case of hydrogen-like species means helium plus, lithium 2 plus, beryllium 3 plus. These are called hydrogen-like species. Hydrogen-like species are containing similar electron as hydrogen atom. Hydrogen atom में 1 electron है, so hydrogen-like species also containing how many electron? 1 electron. जैसे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इनका पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल एटम से पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे बनता है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हीलियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। एक्चुअली इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हुआ। तो इसका पास कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है।
therefore it is a hydrogen like species. लिथियम में एटॉमिक नंबर 3, सो इनका पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इनका पास कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? 1 इलेक्ट्रॉन रह गया. सो लिथियम 2 plus is an example of hydrogen like species. And beryllium 3 plus, beryllium का एटॉमिक नंबर 4, लेकिन ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इनका पास भी इलेक्ट्रॉन 1 रह गया. So these are called hydrogen like species. मतलब these are containing same electron with hydrogen atom. So these are called hydrogen like species. So in case of hydrogen like species, like this atom, ion, hydrogen like species, radius of an orbit, find out currently this is the relation. Rn equal to a naught into n square divided by z. A naught का वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर and n is represents the number of cells और z is the atomic number for hydrogen like species. जैसे कि हीलियम में से हीलियम का रेडियस फाइंड आउट करने से, हीलियम आयन में पार्टिकुलर एक ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करने से हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो z का जगह में 2 डालना पड़ेगा. लिथियम के लिए हम लोग z का जगह में 3 डालना पड़ेगा. बेरिलियम के लिए क्या डालना पड़ेगा? 4 डालना पड़ेगा. so z represents your atomic number for hydrogen like species. लेकिन हाइड्रोजन के लिए z वैल्यू 1 है, इसलिए हाइड्रोजन एटॉम के लिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन हम लोगों को क्या मिलेगा? Rn equal to a naught into n square, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉम के लिए z equal to how many? 1. Similarly, energy of an orbit find out करने के लिए this is the relation. So En equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into z square divided by n square joule per atom. Here n is the number of cells, n represents the number of cells, and z represents the atomic number for the different hydrogen-like species. So this topic is very important for entrance examinations. इससे related numericals are also very important. जैसे कि जब एक इलेक्ट्रॉन 1 एनर्जी लेवल को अनदर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन कितना एनर्जी इमिट करेगा, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इमिटेड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा, एब्जॉर्ब रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज ए very important topic for you. So next day we will discuss another topic of this chapter. So thank you.